So let's define ionic bonding. The ionic bonding, it is a bond formed due to transfer of electrons and formation of oppositely charged ions attracted to each other by electrostatic force of attraction. It is a bond formed due to transfer of electrons and formation of oppositely charged ions attracted to each other by electrostatic force of attraction. सबको चैट में क्वेश्चन पूछ रहे। Well, as per syllabus requirement, they can ask you the definition of ionic bonding, but it's been too long. They haven't asked the definition of ionic bonding. I think it's been 4, 5, I think 10 years. मैं अभी तक ionic bonding की definition पूछी भी नहीं है. But they can ask you the definition. सर देखो तो definition. इस टॉपिक में से क्या पूछते हैं? सर मैं कह रही हूँ अगर डेफिनेशन नहीं आती तो इस टॉपिक में से मेनली आता क्या है? Dot and cross diagram for ionic bonding. You have to identify whether the compound is ionic or not, and properties of ionic compounds. Usually they ask you about the properties of ionic compounds. It's just the start of the topic. Na, in fact, देखो, I make you write many things just for your understanding, ताकि चीजें समझ आए. अब याद करने वाली जो चीज होती है ना, वो मैं खुद बता देता हूँ कि उसके साथ में मार्क्स लिख देता हूँ ना अक्सर. They ask you for 3 marks, they ask you for 2 marks, and then we do the past papers after the chapter. अब इसके चैप्टर के पास पेपर्स तो हम साथ साथ स्टार्ट कर देंगे. आयनिक बॉन्डिंग पढ़ के उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे. So when you do the past paper, you realize what sort of questions they ask. Okay, so usually they do not ask the definitions, they do not ask you about the stability, they do not ask you about duplicate or octet rule. Those were just for your understanding. ठीक है, वो लिख लें ताकि रिवाइज करें तो आपका कॉन्सेप्ट रिवाइव हो जाए. Got it? जी सर. अच्छा, सर आइसोटोप्स की इन्होंने डेफिनेशन सेवरल बार आइसोटोप्स की तो पूछता है, बहुत बार पूछता है. चलें. अच्छा, अब देखो, आयनिक बॉन्डिंग टेक्स प्लेस between elements if any element from group 1, group 2, transition element, group 3, and tin or lead from group 4, if they makes a bond with any of the element from group 5, group 6, and group 7, then such a bond formed is known as ionic bond. The metals, they loses electron to form cations or positively charged ions, and non-metals, they gain their electron to form anions or negatively charged ions. And then they are attracted to each other and they form a bond which is known as ionic bond. The bonding is known as ionic bonding. For example, first of all, you have to identify whether the
compound given is an ionic compound or not? See, sodium chloride. So how would you identify that whether the sodium chloride is ionic compound or not? Because sodium is from group 1, right? And chlorine is from group 7. So sodium is from this family, metal hai, and chlorine is from group 7 from this family, jo ki non-metal hai. So together they will make an ionic bond. So the sodium chloride is an ionic compound. Then you have to develop the formula of sodium chloride. We studied formula making before. इसलिए तो पढ़ा था formula making. How would you make the formula of sodium chloride? Sodium as a symbol Na, as it is from group 1, so it will get a charge of +1. Chloride is from chlorine, right? And it is from group 7, so it forms a charge of -1. Now we cannot further simplify 1 and 1 of sodium. So the one with sodium ion, we will drop the charges को वहीं छोड़ देंगे, and we will bring the number into the subscript of chlorine. Similarly, charge over the chlorine will come under the subscript of sodium. So this formula would be Na1Cl1. And we discussed that in the chemical formula, we do not have to write 1. If nothing is written, by default, it means it's 1. So the formula of sodium chloride would be NaCl. So one sodium ion and one chloride ion, they combine together to form sodium chloride. And what actually is happening, if we see the structure of these atoms, this sodium atom has 11 electrons, 2, 8, 1. This is sodium atom. And it has how many shells? 3 shells. First shell में it has 2 electrons. Sodium के electron हम dot से बना रहे हैं. Second shell it has 8 electrons. Second shell के electrons हम pairs में बनाते हैं ना, दो के. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And the in last shell or outermost shell or the valence shell, it has 1 electron. But sodium right now is not stable because it has 1 electron in its valence shell. Chlorine, on the other hand, has an atomic number of 17. It means it has 17 electrons. The electronic configuration or electronic structure is 2, 8, 7. तो क्लोरीन के पास भी 3 नंबर ऑफ शेल्स हैं. अच्छा, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस से बनाएंगे. The first shell has 2 electrons. Second shell has 8 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And the last shell of chlorine has 7 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So both of these atoms are not stable. What happens then? Sodium, in order to get stable, it loses its 1 electron from its valence shell. ये जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन जाके क्लोरीन गेन कर लेगा. तो सोडियम भी स्टेबल हो जाएगा, क्लोरीन भी स्टेबल हो जाएगा. बट इन डूइंग दिस प्रोसेस, सोडियम विल फॉर्म sodium +1 ion and chlorine will form Cl negative ion. देखो क्या होगा. सर सिंपल वर्ड्स में यही है ना कि जो है किसी भी चीज को स्टेबल होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फिर हम लोग आयनिक बॉन्डिंग. स्टेबल होने के लिए वैलेंस शेल में मेटल के जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबके सब लूज कर देते हैं. नॉन मेटल को जितने रिक्वायर्ड होते हैं वो उतने ही गेन करते हैं. In this particular example, chlorine only requires one electron in its valence shell, so it will only gain 1 electron. Doesn't matter. अच्छा, ये आगे पढ़ते हैं, अभी एग्जाम्पल में आएगा. जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, वो आएगा. तो जब ज्यादा अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, वो आ जाएगी बात समझ. This is 2, 8. After losing 1 electron, sodium will get a charge of +1, and its one outermost shell which had 1 electron is no more. है ना, वो इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गया ना. Now sodium
is left with two shells only, and now it is not a sodium atom. This is sodium ion. It has a charge of +1, right? अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज करा है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? क्लोरीन के पास गया. So chlorine atom will gain this electron because it required one electron in its outermost shell. क्लोरीन ने इसको गेन कर लेना है. सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट से शो किया था ना, तो जो इलेक्ट्रॉन सोडियम का क्लोरीन के वैलेंस शेल में आया वो हम डॉट से शो करेंगे. Chlorine is gaining one electron, so its electronic structure would become 2,8,8, and it will get a charge of -1. And it will show negative charge over chlorine ion like this. It's -1. Sodium +1 है, chlorine negative है, so they will attract each other and they will stick to each other. So that's how we show ionic bonding between sodium chloride. और इस डायग्राम को हम कहते हैं डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो हम क्या कहेंगे? दिस इज अ डॉट. Why dot and cross? Because electrons of one of the atom is shown by the dot and the electrons of the other atom is shown by cross. So this diagram is known as dot and cross diagram of sodium chloride. जी पूछ रहे हो कुछ हंसला? थोड़ा कॉपी करने का टाइम देते हैं. इस डायग्राम को कॉपी करना. हसन थोड़ा लाउड बोला आवाज. सर आप थोड़ा स्क्रॉल कर देते. बच्चे एक एक करके बोलोगे तो समझ आएगा. पहले किसका माइक खुला हुआ है? अरे हंजला, यू आर आस्किंग समथिंग. पहले हंजला आप क्वेश्चन. नहीं सर, मैंने पूछा था गलती से माइक खोला रह गया था मेरा. सर मैंने अभी ज्वाइन करा है ना, क्योंकि मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था. ओके, और अभी दूसरा क्वेश्चन कौन पूछ रहा था? सर आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं. हसन, यू आर आस्किंग सम क्वेश्चन. यस सर, सर बोल रहा हूँ आप थोड़ा टाइम देते कॉपी करने. अच्छा, नोट डाउन करने का टाइम दे दूं? श्योर श्योर, देख लो, ले लो. थैंक यू. डन. सर जी बच्चे. सर जो सॉलिड और लिक्विड्स में होते हैं पार्टिकल्स, राइट? तो उसके उनके जो दरमियान में फोर्स होती है वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, राइट? जो उनको होल्ड कर रही होती है. Yes. Every तो force of attraction in chemistry is due to charges, oppositely charged ions. तो वो सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होती हैं, लेकिन उनको हमने नेम कैटेगराइज किए हुए हैं. फॉर एग्जांपल, आयनिक कंपाउंड्स में वी कॉल दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्डिंग में we will call it covalent bond. Metallic bonding में we'll call it a metallic bond. And what you are talking about is a force of attraction between particles in solid. I think you are referring to van der Waals forces. Again, van der Waals forces are also electrostatic forces of attraction. So every force of attraction in chemistry is electrostatic due to unlike charges. ओके सर, थैंक यू. Okay. चलें आगे. हसन हो गया? सर ओनली 1 मिनट सर. ओके ओके.
Okay, sir. Thanks. Done. Okay. Moving on. सर हम लोग एक और एग्जाम्पल करेंगे फिर हम लोग बच्चे बहुत सारी करेंगे, अभी तो स्टार्ट किया है। Now we are doing magnesium chloride. So in order to make a dot and cross diagram of magnesium chloride, the question is draw a dot and cross diagram of a dot and cross diagram to show ionic bonding between magnesium chloride. Okay. So first step, in order to make a dot and cross diagram, you always have to make a chemical formula. Formula making में पढ़ा है ना? Always make a chemical formula. Do not start making a dot and cross diagram without a chemical formula of an ionic compound. If it is already given in the question, that's good. It is usually given in the question. But if it is not given, then you have to make a chemical formula of an ionic compound. This is your first step. So how would you make the chemical formula of magnesium chloride? Magnesium is from group 2. So it forms the charge of 2 positive ions. And we are sure that magnesium chloride is an ionic compound. Reason being because we already discussed that if any of the element from group 1, group 2, transition element or group 3 makes a bond with any of the element from group 5, group 6 or group 7, then such a bond is a ionic bond. So magnesium is from group 2 and chlorine is from group 7. Magnesium forms the charge of 2 positive and chloride comes from chlorine, right? And it is from group 7. So it forms a charge of -1. So the formula of the magnesium chloride would be the 2 over magnesium would go under the subscript of chlorine and 1 over chloride ion will go under the subscript of magnesium. That's what we learned for magnesium chloride, right? So this is MgCl2. Now, if we see the electronic structure of magnesium, magnesium has an atomic number of 12. Its electronic configuration is 2,8,2. Chlorine has an atomic structure of 17. It's 2,8,7. Magnesium atom has 3 shells, right? And chlorine atom also has 3 shells. आगे पीछे बन रहा है बस। अच्छा, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन हम डॉट से शो कर देते हैं। 1 2 सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 लास्ट शेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस से शो कर रहे हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 and the last shell or the valence shell of chlorine has 7 electrons. Now magnesium atom, in order to get stable, magnesium has to lose how many electrons? 2 electrons. That is fixed for magnesium. Magnesium अगर स्टेबल होगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज करेगा और उसके outer most shell में there are 2 electrons and it will lose those 2 electrons and it will be left with only 2 shells और जो उसका सेकंड लास्ट शेल था वो अब उसका आउटर मोस्ट शेल बन गया, राइट? और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उस पर चार्ज क्या आ जाएगा? 2 पॉजिटिव।
However, chlorine atom only needs one electron in its valence shell. देखो मैग्नीशियम से although magnesium atom has lost 2 electron, लेकिन क्लोरीन एटम जो है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, एक से ज्यादा थोड़ी ना करेगा। वो एक इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा एक क्लोरीन एटम के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम के पास चला जाएगा, बिकॉज इन द फॉर्मूला ऑफ MgCl2 वी हैव 2 chlorine atoms, not 2 chloride ions. So for one magnesium ion we need how many chloride ions? We need 2 chloride ions. देखो तो क्लोरीन एटम ना ऐसे बेसिकली दो होंगे, one of the electron will go to one chlorine atom, the other electron will go to the other chlorine atom. समझ आई ये बात? सर जब हम डायग्राम बनाएंगे तो क्लोरीन, दोनों क्लोरीन को हम एक साथ रख सकते हैं? रख सकते हो, और आप दोनों अलग अलग भी बना सकते हो, दोनों एक साथ बना के सिर्फ एक बना के उसके साथ 2 भी लिख सकते हो। So the best way is to just make one chlorine atom and write 2 before it. Let me show you how. One chlorine atom can only gain 1 electron. अगर मैग्नीशियम 2 लूज कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि क्लोरीन बेचारा उसके दोनों इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। क्लोरीन कैन नॉट गेन मोर देन 1 electron because it already has 7 valence electrons, right? It just need one more electron in its shell. उसके पास उसकी जगह ही नहीं है ना। लेकिन ऐसे कितने क्लोरीन एटम है? 2 है, तो यू विल राइट 2 बिफोर chloride ion. This will show for one magnesium ion you need 2 chloride ion, and you do not have to think about it. The chemical formula will show it na. Chemical formula for magnesium chloride that you have formed is MgCl2. This shows there is one magnesium ion and 2 chloride ion. वो तो फॉर्मूला बता देगा आपको, you do not have to worry about it. कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि Cl-1 की जगह Cl-2 लिख देते हैं, कहते हैं मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो क्लोरीन भी 2 गेन कर लेगा। नहीं कर सकता। 7 में, ग्रुप 7 में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, जगह ही एक है उसके पास। क्योंकि सर स्टेबल होने के लिए सिर्फ 8 चाहिए होते हैं, 8 से ज्यादा नहीं चाहिए होते। अगर 2 करेगा तो वो 9 ले ही नहीं सकता, ले ही नहीं सकता एक से ज्यादा। सर अगर 3 गेन करेगा तो 3 हाँ, अगर MgCl3 होता तो फिर मैं क्लोरीन के साथ 3 लिखता। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स और करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं होमवर्क नहीं दे रहा आपको इसका, मैं खुद करवाऊंगा, वीकेंड पे होमवर्क दूंगा। सर सर आप जी कोई वाह। ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक कोई एक एटम है जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में लाइक 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और वो तीनों इलेक्ट्रॉन बाकी किसी 3 और एटम्स को देने हैं, ऐसे जी कोई एग्जांपल ऐसे है? है। यस, एल्यूमिनियम नाइट्राइड में एक आयनिक बॉन्डिंग फॉर एल्यूमिनियम नाइट्राइड। नाइट्रोजन एटम नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप 5 का है ना। Aluminium is from group 3. It has 3 valence electrons, so it will lose all these 3 electrons, and one nitrogen atom will gain all of these 3 electrons. मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके ये सर, अभी थैंक यू। अराउंड 6 to 7 डॉट एंड क्रॉस डायग्राम मैं खुद बनवाऊंगा आपको, फिर 10 to 15 डायग्राम्स आपको होमवर्क में मिलेंगी। Okay, we have just started studying ionic bonding. We'll practice it a lot. Don't worry. ठीक है। तो अच्छा, आप आज की क्लास में अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना आफ्टर क्लास। आई विल शेयर विद यू द रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ प्रीवियस क्लासेस। मुझे मैसेज कर देना बस एक बार, ठीक है? अभी आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी वाह। सर आप प्लीज ड्राइव की लिंक सेंड कर दीजिए, मुझे ड्राइव की लिंक नहीं मिली। मैं ग्रुप पे दोबारा भेज देता हूँ, सारे ग्रुप पे भेज देता हूँ। ओके, थैंक यू सर। इंशाल्लाह।